Okay, in this video we are going to make a basic game, uh, which is a tic tac toe game, and we will use some basic DOM functionalities, DOM properties, and mm, we will use array, for loop, and various kind of for loops like for off loop and for each loop. Uh, so let us start to make first of all the index.html file, which will create our structure for my game. So let us start. So doc type HTML. Then I have to write the starter code for that. A simple title I am giving here. Now in the body tag I have to make the total structure of my game. Means I have to add elements. So first of all I am giving a heading tag. Then I will make some buttons. Buttons in the sense, we know the structure of a tic-tac-toe game is of 9 boxes, you can say, is of 9 cells, in which we will write either X or either O. So first of all I have to make a heading tag, and let's give the heading as tic-tac-toe game. Then after I have to make at least 9 buttons, because 3 in a row. uh, I will create a div tag, and in the div tag I will create 9 buttons, and for every button I will give a class name, because when I will write my JavaScript file, so I can access this button tag with the help of class name. So this is the first button. Now if I save it and refresh my browser, it will print a heading, and there is a one button here. So I will copy paste it up to 9 times. I think it's done. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, let's save it and refresh it again. So we are getting here 9 buttons, or we can say 9 boxes are made here. Now I will give a class name to my div tag also, because in JS file I will need it. Let us say the class name anything. Let us say it is a game board. So I am giving the name as board. Or we are going to make another heading tag with h2 and giving a id to it. And this I am creating for just I want to print uh, कि जब हम कोई भी player either X or either player O wins the game, then it will print that player O won the game. Or if both player doesn't won the game will draw, so it will print that the game is draw. So for this purpose I'm creating that, and I will give the id as let us say status, so it will denote the status of the game. And after that I have to create a restart button. Means if the game is draw and we are want to play it again, so we can restart the game. So there is a button, and we will give some id to it, because this is a restart button, so I am giving the id of restart, and we just print a restart on it. Let us refresh it, and we are getting a button which is restart. The working of this button is just it will refresh the game and clears all the boxes. So my structure is completed here. Now I have to make some other file like style.css and javascript.js. In style.css I will give some styling to it. So let us give the styling in body, and I want that whatever the content I have written here, it will come in the center of the page, of this page. So for that purpose I have to write text align center.
So when I have to link my css file here also. Okay, now I have to refresh this, and I am getting whatever content I have written in my page. It comes in the center of the page. Now optionally I am just giving the font family as Arial. After that, I will give some styling on my div tag, and I will access the div tag with the class name which I have given board. So I want that button will be display on the page in a horizontal way with the repetition of three. I want three buttons is there, and after this three button, the other three button will display below this, and the other three button will come below that button. So for that purpose, I will use display grid, and I have a property grid template columns in which I will write a property repeat how many times, three times, and every is 100 pixel. Now I have to save it. Let us give some gap also between the buttons. If I refresh it, it will look like this, and there is no gap between the buttons. So I'm just give some gap, and let us give a gap of 5 pixel. Okay, I'm getting the gap of 5 pixel between the buttons. I want that button will come in the center also, so I will write just to justify content center, and now refresh it. Okay, everything is coming in the center, but the button it does not seem like practical. So I have just give some height to the button, and for that purpose I will give some styling on the class of button tag, which is cell. Under this I have just given a height of 100 pixel to every button. Let us refresh. Okay, this looks better, and let us give a font size. Font size, let us give some 30 pixel, or let us give 40 pixel, and optionally I'm giving cursor pointer. Now last, I will give some styling on my restart button. So I'm accessing it by its ID name, that is restart, and hash symbol is used whenever we want to access a ID in style set, and dot is used for accessing class. I will give some margin from top of let us say 20 pixel, or just giving padding to it of 10 pixel from all the sides. So this button will have some styling. Okay, so we have completed the two steps. First, making the structure, and giving some basic styling to our HTML elements. Now the main work is of writing the JavaScript logic. So for that purpose, I will first of all access all the elements of my HTML file, of my HTML element. So for that purpose, I will access and store it in any variable. So console and document dot get element by ID, and the ID name is also cell. Okay, I think I have to use another property, because if I use document.getElement by ID, then I have to write the same line for 9 times, because I have 9 buttons. So if I want that I have to write only one time, then I will use document.querySelector all, and I have just given the class name to it. It will access all the 9 buttons and store in the variable whose name is cell. Let us say cells, because it has more than one cell. Now I will try to access my uh, status of the game, either who which player won the game, or is the game is draw or not. So status text will print
what is the current scene of my game. Either it is running or either it is not running. So I will access it by the ID name. Now I will access the restart button. Okay, we are now accessed all the elements of our HTML file. Now the work is making two variables. I am going to make two variables, and one variable will denote that who is the current player, either player X or either player O, and another I will make a variable that indicates the game is running or not. So let us make it. I have made a variable running and assigned true to it. I am assuming that the game is running, not stopped. And whenever I will get any kind of winning pattern, any kind of message that player X or player O wins the game, I will make the running variable equals to false. नाउ अब हम लोग इसमें विनिंग पैटर्न्स को फीड करेंगे। हम अपने जावा स्क्रिप्ट को ये बताएंगे कि कौन से कंडीशन पे आने पे मुझे ये मैसेज मिल जाए कि प्लेयर एक्स गेम को जीत चुका है या फिर प्लेयर ओ गेम को जीत चुका है। एंड फॉर दैट पर्पस ये जो बॉक्सेस हैं वो हमारे इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो बॉक्स है वो जीरो इंडेक्स पे है, ये वन पे है, ये टू पे है। देन सिक्वेंसली ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट्थ पोजीशन पे है। सो हमें जब विनिंग पैटर्न इसको बताना होगा, यानी इधर यहाँ पे ओ आ जाए, यहाँ पे ओ आ जाए और यहाँ पे ओ आ जाए, तो अगर तीनों बॉक्स एक साथ या तो ओ आ जाए या तो एक्स आ जाए, तो मुझे ये प्रिंट कर देना चाहिए कि प्लेयर ओ गेम को जीत चुका है। सो फॉर दैट पर्पज मैं इसमें एक एरे बनाऊंगा जिसमें हम कुछ पैटर्न को फीड करेंगे जो कि हमारे विनिंग पैटर्न्स होंगे। विन पैटर्न्स एंड लेट अस राइट 0 1 and 2. This will indicate this 0 1 and 2. ओके। उसके बाद हम लोग इसके लिए भी हम लोग एक इंडेक्स लिख लेते हैं 3 4 5, देन आफ्टर 6 7 8। सो 3 4 5 देन 6 7 8। ये हॉरिजॉन्टली तो हमने लिख लिया है सारे पैटर्न्स को। अब हम लोग वर्टिकली भी लिख लेंगे। सो वर्टिकली मेंशन करने के लिए मुझे लिखना होगा जस्ट जीरो, ये जीरो वाला था, ये थ्री था और ये सिक्स था, तो जीरो थ्री और सिक्स, जीरो थ्री एंड सिक्स। एंड सिमिलरली दूसरे वर्टिकल लाइन के लिए 1 4 7, देन आफ्टर 2 5 8। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो हमने सारे विनिंग पैटर्न बता दिए हैं, लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि डायगनली हमें मैचिंग मिल जाए, इस बॉक्स में भी ओ हो, इसमें भी ओ हो और इसमें भी हो। सो फॉर दैट पर्पज आई हैव टू मेंशन द बोथ। सो 0 4 8, there is one diagonal and the another diagonal is denoted by 2 4 and 8. नाउ हमने इसे विनिंग पैटर्न बता दिया है। अब हम लोग हर एक सेल पर इटरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप, और इसमें हम लोग इवेंट को ऐड करेंगे। यानी अभी मैं किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो उसमें कुछ प्रिंट हो, आइदर एक्स प्रिंट हो आइदर ओ प्रिंट हो। सो उसके लिए मुझे बस वेरिएबल का नाम जिसमें मैंने उस सारे के सारे 9 बटन्स को एक्सेस किया था वो मैं लिखूंगा और फॉर ईच लूप लगा दूंगा। Then I have to make the name of the ID of that button, or name of the class actually. Cell is the name of the class, and I have used a arrow function. So, or in arrow function, I have written cell dot add event listener, और इसमें मैं click event लगाऊंगा, so I have to write click,
एंड देन आई हैव टू पास अ नेम ऑफ द फंक्शन। सो मैं कुछ भी फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ, क्लिक और सेल क्लिक में लिख देता हूँ इसमें। और ओके, बस ये 3 लाइन का, बस 2 लाइन का ये मतलब है कि इस वेरिएबल में हमने सारे के सारे बटन्स को एक्सेस किया है और उसमें हम लोग फॉर ईच लूप लगा रहे हैं एवरी सेल के लिए। यानी जिस बटन का जो क्लास है वो अगर सेल है तो उसमें एक एरो फंक्शन हमने पास किया है कि हर सेल में एक इवेंट को ऐड कर दो जो जिसका नाम क्लिक होगा, और जैसे ही क्लिक होगा उस बटन पर तो सेल क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल लग जाएगी। लेकिन अभी तक हमने सेल क्लिक नाम के फंक्शन को बनाया ही नहीं है, तो लेट अस मेक द फंक्शन सेल क्लिक। सो फंक्शन सेल क्लिक, एंड मैं यहाँ पे बस एक कंडीशन को चेक करूँगा कि इन बॉक्सेस के अंदर कुछ अभी कंटेंट है या नहीं है। तो इसको हम मुझे अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करूँगा, और दिस डॉट में सिंपली डोम का एक प्रॉपर्टी होता है इनर एचटीएमएल, मैं उसका इनर एचटीएमएल नहीं, यहाँ पे मैं इनर टेक्स्ट को यूज करूँगा। एंड इफ दिस डॉट इनर टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर ये खाली नहीं है, या फिर मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूँ नॉट रनिंग, और हमें पता है कि हमने रनिंग नाम के वेरिएबल में ऑलरेडी इनिशियली मैंने ट्रू लगाया था, यानी गेम को हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो ट्रू है, यानी वो रनिंग में है, एक्टिव स्टेट में। सो ये दो कंडीशन हमने चेक किया कि क्या कोई सेल मेरा ब्लैंक तो नहीं है, या फिर वो स्टॉप तो नहीं हो गया है। इन दो सेल कंडीशन को चेक करने के बाद अगर ये दो कंडीशन ट्रू है तो मैं बस सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, देन आफ्टर आई हैव टू राइट दिस डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू current player, and then I have to write another function which will decide who is the winner. तो चेक विनर नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल लगा दिया है। बट अभी तक हमने इस फंक्शन को बनाया नहीं है, तो अब नीचे आकर हम लोग इस फंक्शन को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन चेक विनर, और इस फंक्शन का ये काम होगा कि जो भी प्लेयर जीत चुका है उसे विन डिक्लेयर करना। तो फॉर दैट पर्पज़ मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करना होगा मुझे, तो मैं उस वेरिएबल का नाम वॉन ले लेता हूँ और इनिशियली मैं उसको फॉल्स ले लेता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक कोई भी प्लेयर गेम को नहीं जीता है, और जैसे ही कोई भी प्लेयर गेम को जीत जाएगा तो आगे चल के हम लोग वॉन नाम का वेरिएबल में जो फॉल्स था उसको ट्रू डिक्लेयर कर देंगे। सो फॉर ऑफ लूप का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, फॉर ऑफ लेट, और ये किस बेसिस पे हमें विनर देगा, ये हमारे विन पैटर्न के बेसिस पे हमें विनर को देगा। सो मैं कुछ भी यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, पैटर्न ऑफ विन पैटर्न्स, और इसमें जाकर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ए नाम का, जिसमें मैं बस सिंपली सेल्स ऑफ पैटर्न ऑफ जीरो को स्टोर करा लेता हूँ एक बार, डॉट इनर टेक्स्ट में लिख लेता हूँ ताकि इसके अंदर की वैल्यू मुझे पता चल सके कि यहाँ पे मैंने क्रॉस दिया है या फिर ओ दिया है। ओके, यहाँ पे नहीं, इसके बाहर मैं लिख लेता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट। अब इस फॉर लूप का क्या काम हो रहा है कि इसने बस विन पैटर्न नाम के एरे को इटरेट किया और वहाँ से उसने पता लगाया कि वो मेरे विनिंग पैटर्न को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फॉर दैट पर्पस मैंने एक तो जीरो पर क्या वैल्यू स्टोर है डॉट इनर टेक्स्ट से फेच किया और उसे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। एंड सिमिलरली मुझे एटलीस्ट 3 वेरिएबल यहाँ पे बनाने होंगे। सो आई विल कॉपी पेस्ट, एंड इसके नाम में कुछ भी ए की जगह बी दे देता हूँ, देन यहाँ पे सी दे देता हूँ, और इनके इंडेक्स को भी मैं बदल देता हूँ 1 एंड 2। सो ये जो भी है ये सारे के सारे विनिंग पैटर्न पर चलेगा। तो मैंने इनिशियली 0, 1 और 2 के लिए यहाँ पे पहले से यहाँ पे फीड दे दिया है कि क्या इसको परफॉर्म करना है। इसको बस हर सेल पे जाना है और उस पर चेक करना है कि उस पर कौन सा वैल्यू स्टोर है, आइदर क्रॉस और आइदर ओ, आइदर क्रॉस और आइदर ओ। अगर तीनों में क्रॉस उसको मिल जाएगा, अगर वो मैच कर जाएगा तो प्लेयर एक्स वॉन द गेम हो जाएगा। अगर तीनों बॉक्स में उसे 0 0 0 लिखा हुआ मिले, ओ लिखा हुआ मिले, तो प्लेयर ओ वॉन द गेम यहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए। सो अब उसको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे वो मैचिंग कंडीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए बस मैं इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू ब्लैंक और बी
ट्रिपल इक्वल्स टू ब्लैंक एंड और सी ट्रिपल इक्वल्स टू ब्लैंक। इफ़ दिस कंडीशन एग्जिस्ट, अगर कुछ ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है तो मैं बोलूँगा इसको बस कंटिन्यू रखने को, कि अभी तो मुझे कुछ कोई भी विनिंग पैटर्न मिला ही नहीं, या इसने इस बॉक्स को देखा वो खाली था, इसको चेक किया वो भी खाली था, इसको चेक किया वो भी खाली था। अगर उसमें ब्लैंक है तो मैं बोलूँगा कि कंटिन्यूली वो आप इटरेट करते जाओ। लेकिन अगर मुझे कोई पैटर्न मिलता है लाइक ए इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू बी मिलता है, और यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, बी ट्रिपल इक्वल्स टू सी मिलता है मुझे, तब मैं लिख दूंगा कि वॉन इक्वल्स टू ट्रू। इनिशियली मैंने वॉन में फॉल्स स्टोर किया था क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि अभी कोई भी प्लेयर ने मैच को नहीं जीता है। बट अब मुझे कोई पैटर्न मिल गया, अब मुझे किसी थ्री सेल में ओ ओ और ओ लिखा हुआ मिल गया, सो मैंने यहाँ पे वॉन नाम के वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर दिया एज ट्रू। और जैसे ही मुझे मिलेगा तब मैं लूप को ही ब्रेक कर दूंगा, आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर। सो आफ्टर दिस मैं ये करूँगा कि ये चीज़ को भी मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। अब वो कैसे करेंगे कि हम लोग को के पास वॉन नाम के वेरिएबल में ट्रू है, तो मैं बस इतना चेक करूँगा कि इफ़ वॉन, दैट मीन्स अगर वॉन की वैल्यू ट्रू है तो ये कोड परफॉर्म हो। अब ये कोड क्या होगा, इसमें हमें याद होगा कि हमने एक स्टेटस टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया था इसी चीज़ के लिए, जो कि ये प्रिंट करेगा कि विच प्लेयर वॉन द गेम, और इफ एनी प्लेयर डजंट वॉन द गेम देन इट विल प्रिंट द गेम इज ड्रॉ। सो आई हैव टू राइट जस्ट status dot status text dot inner text, and under the backtick I will write player, uh, I will make a string interpolation property. So dollar, under the curly braces I will write the name of the variable of current player, and then after I will write wins. दोनों प्लेयर प्लेयर में से अगर कोई भी प्लेयर जीत जाता है तो मैं रनिंग नाम के वेरिएबल को फॉल्स डिक्लेयर कर दूंगा, क्योंकि अब मेरा गेम रुक जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियली हमने रनिंग में यहाँ पे ट्रू स्टोर कराया था, और जैसे ही मुझे एक प्लेयर मिल गया जो गेम को जीत चुका है तो मैं गेम को स्टॉप कर दूंगा, और उसके बाद अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ओके, देन आई विल मेक अ एल्स इफ कंडीशन, और इसमें मैं लिखूंगा डॉट 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 सेल्स। Okay, I have written the else if condition in which I have written dot 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 cells, yani name of the variable, with a dot and every function I have used, and in this I have written the name of the class, and there's an arrow function, and this arrow function will going to fetch the whatever the value stored in every cell। हर एक सेल में कौन सा वैल्यू स्टोर है वो उसको फेच करेगा, और वहाँ पे ये एक कंडीशन इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर वो खाली नहीं है तो इनर टेक्स्ट के हेल्प से हम लोग स्टेटस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में ये प्रिंट करवा देंगे, इट इज़ ड्रॉ। दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट है, आइदर एक्स है आइदर जीरो है, ये सारे भरे हुए हैं, लेकिन उसको कोई भी विनिंग पैटर्न नहीं मिला। अगर विनिंग पैटर्न उसको नहीं मिलेगा तो हम लोग ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि अब तो कोई बॉक्स मेरा खाली भी नहीं है और मेरे पास कोई विनिंग पैटर्न भी नहीं है, दैट मीन्स द गेम इज नाउ ड्रॉ। एंड फिर हम लोग रनिंग वेरिएबल को फॉल्स कर देंगे, और यहाँ पे चेंज प्लेयर नाम के फंक्शन को कॉल किया है मैंने। अब चेंज प्लेयर नाम का फंक्शन क्या करता है कि ये बस इस बात का ध्यान रखता है कि अगर प्लेयर एक्स ने अपना टर्न चल दिया है, अपनी बारी को वहाँ ने चल दिया है, तो अब प्लेयर ओ की टर्न आएगी। देन आफ्टर प्लेयर ओ की टर्न द नेक्स्ट चांस इज ऑफ प्लेयर एक्स। सो let us make that function a function whose name is check winner, not the check winner, it is change player, and in this function I will write the current player equals to current player triple equals to, I am just using the simple ternary operator, and question mark, then o, then colon x again. Okay, now this is the syntax. It is checking if current player is x, then the next turn it could be of o, and if the current player is o, then the next turn is of x. Now status डॉट टेक्स्ट में, स्टेटस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में हम लोग डॉट इनर टेक्स्ट का हेल्प से ये प्रिंट करा लेते हैं कि अब किसका टर्न आएगा। सो प्लेयर
Again, I am going to make a string interpolation, and in this I have written current player. Okay, I will print the current player's turn. Okay, now the final and the last logic I am going to write for my restart button. That means जब भी मैं restart button पे click करूँ तो सारे के सारे जो हमारे box है वो clear हो जाने चाहिए simply. Then the name of the variable is restart button, the class name, and इसमें हम लोग एक event listener को add कर लेते हैं तो and the event listener will be of click, और एक function को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. Restart the game is the name of the function. Now अब हम लोग को इस function को create करना होगा. So function restart game, and in this function I will just write the current player equals to capital X, and I will make the running equals to false. First of all, the game must be stopped. Actually running equals to true I have to make, and then after we have to deal out with status. Okay, text dot inner text equals to okay player, then cells dot for each. I will clear all the cell now. There is an arrow function in which I will make cell dot inner text equals to blank. Now simply this. Now I've just add my script file in my HTML file. And now I will refresh my page, and when I click on it, then see what will happen. Okay, it is working right now. So X is print here. Then if I click here, then O is present, and it is printing the player X turn is right now. So I will print X here and O here. I will print the X here and O here. Okay, if it getting the winning pattern, because this all value are same, so it is printing player O wins the game. If I click on the restart button, then it should clear all the cell. Okay, let us first check a condition of draw. Okay, it is printing draw, but if I am clicking on the restart button, it is not working. So let us go to inspect, and there is one error in my console. Okay, type error is there, cannot read properties of null. Okay, reading and not event listener script.js68. Here it is not working, but why? Okay, restart button dot add event listener I have written, and then click event is there, then restart function is there, but it is not working. Why it is not working? There is a type error